Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, I'm sure you must be enjoying our Read It Right modules. Read It Right module, as the name suggests, read it right. That means you should read in a right framework. You should understand, you can say, the idea in a proper manner. दोस्तों बहुत बार many of us are not able to read the things in a right way, okay, and that's the reason why we are bringing this module. दोस्तों हमारी ये मॉड्यूल आपके ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, आपके competitive exams के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. I believe the people who are regularly watching this video, practicing the methods being shown to you here, ठीक है, will be very useful to you. दोस्तों ये मेथड, ठीक है, बहुत तेजी से तो आएगी नहीं, ये सुनो, क्योंकि रीडिंग हम बचपन से करते आ रहे हैं पर हमने सही तरीके से नहीं किया होगा, या बीच में कभी वायरस घुस गया है हमारे दिमाग में कि हम जल्दी में पढ़ने के लिए कभी कभार हम गलतियां कर देते हैं. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फुल आइडिया. सो दोस्तों, इन केस यू आर अपियरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक क्लैट, ठीक है, जहां पे यू हैव टू रीड अ लॉट, whether it is reading comprehension or logical reasoning, they come with a lot of paragraphs, and if you don't read them in a right way, it creates trouble to you. You are not able to understand the idea fully and you are not able to jump to the answer in a proper manner, okay? And that's where we are bringing this read it right. We are saying we have to master the art of reading. How do we master the art of reading? Okay, we go through practicing a lot of RC passages. Yes, so दोस्तों RC passages आप अपने मॉक में तो लिखते ही है. Pro Talent provides you lot of mock. कल ही संडे को हमने एक मॉक दिया था, yes or no? But at the same time you have to focus on, you can say, going through good quality newspaper articles. When you read them, what do you read for? You read for what is the premise, what is the conclusion, okay, what are the assumptions, how the idea is getting framed. That's very important. Okay, chaliye, great. Let's start to talk about this. Okay, we are going to talk about Ukraine's multiple dimensions. Now, this is what I have brought in from Business Standard editorial on 19th March, and this is talking about how do we view Ukraine conflict from many different perspectives. Yes or no? That is what we have to worry on. I'm sure सब लोगों को पता होगा यूक्रेन के अंदर काफी बड़ी दिक्कत चल रही है. This has been 25th day, ठीक है, and it has created havoc to Ukrainian people, to Russian economy, and to the world at large. ठीक है, so here the author brings very interesting point. So I'm going to put this, you can say, article का सीधा link to you. ठीक है, I'm going to put this article in a Telegram channel. ठीक है, so don't miss out on it. It is very important for you to go through, you can say, this Telegram channel of Pro Talent. Okay, so don't miss out on it. Okay, you can also visit our, you can say, website called www.protalentdigital.com. ठीक है, wherein we are going to discuss about, you can say, varieties of the courses. All those information is available. ठीक है, I'm also going to make a separate course on Read It Right so that I can possibly give you good quality articles. ठीक है, and that will be free of cost. ठीक है, you can very well join that program. Okay, I'm going to put that course, ठीक है, in this you can say link as well. Okay, in this video के description में मैं आपको बताऊंगा. चलिए, great, let's start. So here the author starts with a very interesting point, that is Ukraine to be viewed from various angles. It starts with a very interesting point. It says one can consider Ukraine conflict at 3 levels. Which are those 3 levels is a very interesting point being put forward. At the obvious one, okay, that is the first one. Okay, the Vladimir Putin is a bad guy who attacked an independent country after serially declaring it a non-country. So saying Ukraine is a non-country, okay, and thereby we are putting, it's our, you can say, military operation. It's not a war, it's a military operation. That's what he said, but later on it turned out to be a war. Okay, he also misread Ukrainian who wished to be part of the West and bungled militarily. He misread them. What do you mean by misread them? ठीक है, Ukrainian wanted to be part of European Union. ठीक है, he misread them
saying that they wanted to be part of NATO and thereby is not very happy about it. This means he may now have to dangerously up the ante. ठीक है दोस्तों, ये देखिए up the ante is going against them. You can say creating some trouble to you, and creating some problem with you, ठीक है, or face trouble at home. So he is dangerously up ante. That means यूक्रेनियन के साथ लंबी लड़ाई में घुस चुके हैं, yes or no, and और दो चीजें, face the trouble at home. Either way, his country and its economy rendered an outcast by the Western power. So Western power termed his country, ठीक है, and his economy as an outcast. What do you mean by outcast? कि भाई कास्ट में से बाहर कर दिया, ठीक है, ऑस्ट्रेसाइज कर दिया. क्या वर्ड है? ऑस्ट्रेसाइज करना, ठीक है. टू ऑस्ट्रेसाइज समवन, किसी को अपने ग्रुप में से बाहर निकाल देना, ठीक है. समवन टू बी टर्म्ड एज अनटचेबल्स, ऐसा कर देना. सो यहां पे आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, उनके लोगों के ऊपर, उनकी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है. एंड दे आर फेसिंग डिमिनिश्ड फ्यूचर. So this people of Russia are facing diminished future. Not only the Ukrainian people are, we can say, getting away from their own country, but Russians are also getting away from their own country because they believe the future is not good. No sensible leader would have put these people in such a pickle. Putting someone in a pickle is putting someone into such kind of dangerous situation. ठीक है. सो दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन is a bad guy, is not a sensible leader, is what the author says of this particular, you can say, editorial. ठीक है. There is second, geopolitical level. So there are three levels. One on a personal level, that is a leader level. Second is now on a geopolitical level, ठीक है, at which to view these events. So through which lens we are viewing this? Geopolitical, you can say, level. What is the meaning of geopolitical level? भैया geopolitical level का मतलब हो गया कि भाई आप पॉलिटिकल एंगल से देखते हो और वो भी जोग्राफिक एंड पॉलिटिक्स को साथ में देख रहे हो, ठीक है. चलिए समझते क्या हुआ. When the Soviet Union collapsed 3 decades ago, we all know it has happened in 1991. The entire Soviet Union was divided into 15 different countries. ठीक है. Commentators like Henry Kissinger, you can say Zbigniew Brzezinski, ठीक है, observe that the collapse did not mean to an end to this strategic threat from the Russia. So when Soviet Union collapsed, the important commentators, ठीक है भैया, ऑब्वियसली ये जो बड़े बड़े यू कैन से थियोरेटिकल पीपल होते हैं, जो थियोरेटिशियन होते हैं, थियोरिस्ट होते हैं, ठीक है, दे टेल टू द वर्ल्ड हाउ टू व्यू दिस सिनेरियो. दे सेड कि लुक, द थ्रेट फ्रॉम रशिया हैज नॉट एंडेड. ओके, थ्रेट फ्रॉम रशिया हैज नॉट एंडेड. इन इफेक्ट दे वर हार्किंग बैक टू द थ्योरी put forward by Halford Mackinder. Mr. Halford Mackinder gave a very interesting theory, जो यहाँ पे शायद डिस्क्राइब करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे तब. He is a British imperialist geographer who argued in 1904. We are talking about 1991, ठीक है, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ. उसके पहले 1904 में एक मजेदार सी थ्योरी बना के रखी थी, that the globe was divided into 2 parts. One, Eurasian heartland comprising of Eastern Europe and inland Asia, and the second, subordinate maritime lands like USA that depended on sea power. So the argument is saying that, look, the theory is saying that, look, the world is divided into 2 parts. One is a Asian heartland, okay, that is, you can say, Eurasian heartland, not only Asia but Asia and some part of Europe, that's a heartland. Okay, and then because they are supported by a lot of you can say land related area, so that's a land area. And then the other part, which is basically called, you can say the USA, which are called subordinate maritime. What is relevant today in today's context is that he argued for creating a strip of independent states that would separate Germany and Russia into a buffer zone.
So let's understand once again this idea. Okay, so I have tried to, you can say, go through this theory. The theory says, look, who rules East Europe commands the heartland. ठीक है, मतलब जो लोग ईस्ट यूरोप को कंट्रोल करेंगे वो लोग, you can say they will command the heartland. What is this heartland? Is this area which is called Eurasian heartland. कुछ पार्ट यूरोप का, ज्यादातर पार्ट ऑफ, you can say, एशिया का. ठीक है, जिसका कंट्रोल ईस्ट यूरोप में होगा वो पूरा का पूरा लैंड एरिया को कवर करेगा. एंड हु रूल्स, यू कैन से, वर्ल्ड आइलैंड्स कमांड द वर्ल्ड. ओके, सो दैट मीन्स जो लोग इस सी रूट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेंगे. यस नो, तो लैंड को कंट्रोल करना है तो आपको करना पड़ेगा ईस्ट यूरोप में कंट्रोल करना पड़ेगा. यस नो, वाइल इफ यू वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड, ठीक है, देन यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस रीजन. ओके, सो दोस्तों आपने देखा होगा जब कॉलोनियल एरा था, ठीक है, तो इंग्लैंड was controlling this region. So when England was controlling this region, ठीक है, they were controlling the world. ठीक है, in the last, you can say, 50 to 60 years, America was controlling this region. So America was becoming powerful. Now China, due to that, you can say, spring of, you can say, pearls का policy, ठीक है, string of pearls का policy through which they want to कंट्रोल दिस. हाउएवर अभी पूरा कंट्रोल तो नहीं है, बट यही, शायद यही विचारधारा, यू कैन से, हमारे पुतिन साहब के पास होगी. हमारे क्या मतलब, पुतिन के पास होगी. पुतिन यही सोच रहा है कि भैया मैं ये एरिया को कंट्रोल कर लूं, दैट इज, यू कैन से, ईस्ट यूरोप. ठीक है, और वहां पे बफर जोन बना दूं. बफर जोन क्या बनेगा? यूक्रेन. यूक्रेन विल बिकम अ बफर जोन. ठीक है, ओके, सो बफर जोन किसके बीच में होगा? ये जो पावर, सी पावर होगा और लैंड पावर के बीच में बफर जोन होगा, तो एक स्टेबिलिटी मेंटेन होगी. व्हेन वी हैव अ स्टेबिलिटी, देयर इज नो फाइट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम, यू कैन से, देयर इज नो थ्रेट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द सी पावर टू द लैंड पावर. Okay, that is what he is arguing. So what Western powers have done in the past 3 decades is to ignore that advice. What advice? Creating a buffer zone. Yes or no? So Western countries, if they wanted to control the world, they had to create certain kind of buffer zone. They did not follow that, and they expanded both in both their European Union and North Atlantic Treaty Organization eastward. ठीक है, सो दोनों को ये ईस्टवर्ड लेकर गए, इंटेंडिंग टू टेक बोथ द रशियन, इंटेंडिंग टू टेक बोथ टू रशियन डोर स्टेप. रशियन डोर स्टेप पे ये दोनों लेकर गए. किसको लेकर गए? यूरोपियन यूनियन को और नेटो को. यूरोपियन यूनियन इज एन इकोनॉमिक यूनियन, नेटो इज अ मिलिट्री ग्रुप. सो जब कोई मिलिट्री ग्रुप इतना नजदीक पहुंचेगा और एक इकोनॉमिक ग्रुप इतना नजदीक पहुंचेगा, तो एक पावर, ठीक है, जो लैंड का एरिया है जहां पे पूरा पावर क्रिएट हो रहा है, उस पावर को दिक्कत होगी. दे विल नॉट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. ठीक है, इन इफेक्ट दे वांटेड टू मेक श्योर दैट यूरोशियन हार्टलैंड power, that is Russia, would not be able to challenge them, ठीक है, as the old Soviet state had done. ठीक है, तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि चलो अब पूरा सोवियत यूनियन तो टूट गया है, तो अब हम पहुंचेंगे रशिया नजदीक. ठीक है, रशिया के नजदीक पहुंचेंगे तो रशिया को इस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे ताकि रशिया हमारे पे आरोप न कर, हमारे ऊपर कंट्रोल न कर सके, हम पूरे उसके ऊपर कंट्रोल करें. मिस्टर पुतिन वॉर्न, you can say, against cornering his country. उन्होंने बहुत बार वार्न किया. Specifically mentioned the Eurasian concept in the landmark speech, wanted a Russian zone of influence to its west. ठीक है, तो बोला कि एक काम करो, ठीक है, आप यहां तक मत आओ. ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप यहां तक घुसो मत. ठीक है, ये हमारा एरिया है, हमें अपने मर्जी से काम करने दो, वेस्टर्न लोग यहाँ पे नहीं आने चाहिए. ठीक है, डॉक्टर किसिंजर हिमसेल्फ आर्ग्यूड टू नॉट अवेल, मतलब उनके आर्ग्यूमेंट जो हुई उसका कोई फायदा नहीं हुआ. इन द लास्ट फ्यू मंथ्स फॉर कीपिंग न्यूट्रल बफर स्टेट्स बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट, उन्होंने बोला था कि बफर रखना चाहिए पर हुआ नहीं. एज थिंग्स में टर्न आउट, अब यहाँ पे प्रेडिक्शन दे रहा है ऑथर, अपना प्रेडिक्शन है कि एज थिंग्स में टर्न आउट, ठीक है, कि कैसे सिचुएशन अगर फ्यूचर में क्रिएट हो, अ सेटलमेंट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट वुड मीन ट्रीटिंग यूक्रेन and Belarus as a buffer zone, which is more or less what Russia had wanted all along.
ठीक है, रशिया इतने समय से यही तो डिमांड कर रहा था कि हमें यूक्रेन और बेलारूस को बफर जोन की तरीके से ट्रीट करना चाहिए। बेलारूस तो एनीवे बफर की तरीके से ट्रीट हो ही रहा है, पर यूक्रेन पता नहीं क्यों अपने विचारों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और यूरोप या नेटो उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, विच इज रॉन्ग. व्हाट रिमेन्स अननोन इज वेदर द सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया विल लास्ट बियॉन्ड एनी सच सेटलमेंट. ये सेटलमेंट होने के बाद भी क्या रशिया के ऊपर सैंक्शन आगे बढ़ते रहेंगे, पता नहीं है. ये ऑथर बोलता है कि आई डोंट नो दैट. इफ दे डू, अगर रहे, it would mean that the geopolitical intent to corner Russia remains, which means Western countries are interested to corner Russia. ठीक है, so that is what the idea is. Okay, ठीक है. And there is finally the third level. पहला लेवल क्या था कि आदमी बुरा है, ठीक है, is not a sensible leader. Number two, geopolitical scenario. Geopolitical scenario says there has to be a kind of, you can say, two different group, और दोनों एक दूसरे के ऊपर unnecessary, you can say, लड़ाई नहीं लड़ने चाहिए. ठीक है, दोनों पावर है और दोनों पावर जब लड़ेंगे तो पूरे वर्ल्ड का नुकसान होगा. ठीक है, तो एक बफर जोन लगा के चलेंगे तो एक स्टेबल पीसफुल सिनारियो डेवलप होगा. इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट. सो द थर्ड लेवल of civilization idea through which to view this longer term development of European new right and its variants. ठीक है, now it is not to be looked from a leader point of view, it is not to be looked from the point of view of geopolitical scenario, but from the scenario of new age thinking about, you can say, rights of the people, civilizational ideas of the society. उसके नजरिए से हमें देखना चाहिए. So when we are able to see from the civilizational viewpoint, we see from a different angle. Okay, let's see this. Okay, so I'm sure you understand that. Look, such kind of you can say editorial help us to understand the world around us from a different angle. Okay, so the point here is कि when we talk about the idea here, that's a new civilizational ideas, parties devoted to challenging the dominant liberal democratic ideas, any parties which are, you can say, which are challenging democratic liberal ideas. ठीक है, व्हाट इज द डेमोक्रेटिक लिबरल आइडियाज? ऐसे विचार जो बोलते हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स लोगों के इंपॉर्टेंट है, नहीं के कम्युनिटी के राइट्स. ओके, जैसे आपने देखा होगा इन द रिसेंट हिजाब वर्डिक्ट, ठीक है, इन द रिसेंट हिजाब वर्डिक्ट द जजमेंट केम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कम्युनिटी के राइट्स आर इंपॉर्टेंट, नहीं के इंडिविजुअल राइट्स आर इंपॉर्टेंट. सो वी आर गोइंग ऑन द सेम विचार एक तरीके से देखा जाए तो हिजाब के केस में. हाउएवर इन जनरली एज इंडिया वी हैव ऑलवेज गिवन मोर वेटेज टू, यू कैन से, लॉट ऑफ फोकस ऑन द individual, you can say, rights rather than community rights. So here the parties which are devoted to challenging this dominant liberal democratic ideas, ठीक है, have captured powers in countries like Hungary and gained traction. Gaining traction का मतलब होना gaining support, gaining popularity. So they gain popularity elsewhere through political parties inclined to an ethno-national views in Germany, France and Sweden. So what is the idea of ethno-national view? Ethno-national view का मतलब कि हमारा नेशन महत्वपूर्ण है, हमारा नेशन ऊपर है, हमारी एथनिसिटी ऊपर है, हम सुपीरियर है और बाकी लोग नीचे वाले हैं. ये सुनो, हमारा अपर कास्ट है, वो लोग लोअर कास्ट वाले हैं. एंड देयर बाय यू कैन से हम अपने कास्ट को, अपने नेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. एंड देन वी विल ऑलवेज फोकस ऑन कम्युनिटी विचारधारा. ठीक है, हमारी कम्युनिटी को, हमारी एथनिसिटी को, हमारे नेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश. Yes or no? So that is what the idea is. The ideological underpinning for this challenge comes from a quite different intellectual tradition with an alternative construct variously articulated by Russian, German, French philosophers, historians, journalists of a century ago, some of whom had identified with Nazis and European fascism. So this idea is not new. This idea is quite old, centuries old. ठीक है, जहां पे आप बोल रहे हो कि एथनो नेशनल व्यू होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, ये इतने साल पुराना जो व्यू है, जिसको नाजीज भी बोल सकते हैं, यूरोपियन फासिज्म भी बोल सकते हैं. ऐसे राइटर्स दे ऑलवेज क्वेश्चंस द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, इगालिटेरियनिज्म एंड राइट्स ऑफ मैन. ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म? लिबर्टी होना, फ्रीडम होना. इगालिटेरियनिज्म,
इक्वालिटी होना, ठीक है। इगालिटेरियनिज्म का मतलब होता है एवरीवन हैज टू बी ट्रीटेड इक्वल, एवरीवन इज इक्वल, ठीक है। एंड द राइट्स ऑफ मैन दैट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है। तो ये राइटर इन सब चीजों पे क्वेश्चन करते हैं एंड इंस्टेड, look at the word, instead they argue in favor of communitarian view of the society. they say community का व्यू क्या है, कम्युनिटी अगर ये बिलीव करती है कि हम सबको साथ में रहना चाहिए और हमें इंडिविजुअल अधिकार को नहीं देखना चाहिए, दे एक्सेप्ट दैट, दे ऑल्सो एक्सेप्ट द यूज ऑफ वायलेंस, द परस्यूट ऑफ नेशनल ग्रेटनेस or destiny and the cult of the leader. So that is this writers. Who are these writers? The writers who, so what we are seeing is Ukrainian war has to be viewed from the third angle, which is called civilizational idea. The new idea which is put forward is quite old, century old idea था, उसी के विचार को आगे बढ़ाया, जहां पे हम बात करते हैं कि नहीं, हम इंडिविजुअल अधिकार को नहीं देखेंगे, इंडिविजुअल लिबर्टी को नहीं देखेंगे, इगालिटेरियन दुनिया को नहीं देखेंगे, मानव के अधिकार को नहीं देखेंगे, बट वी विल सी हाउ कम्युनिटी व्यूज देम, हम कम्युनिटी को पहले रखेंगे, ठीक है। दे टॉक ऑफ इंसरेक्शन ऑफ नेशनल पॉपुलिज्म, देश के लिए पॉपुलिस्ट विचारधारा के लिए देश के मेजोरिटी लोगों को क्या पसंद है वो पहले है, नहीं कि एनी अदर थिंग। रिजेक्ट यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक ह्यूमन राइट्स, लाइक इंडिविजुअल राइट्स, लाइक रूल ऑफ लॉ, ठीक है। एस द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंस and they subscribe to an ethno-nationalism that endorses social hierarchies and excludes minorities from a concept of ethno-national nationhood that is free from the factual world, all of it in pursuit of a rooted future. क्या बोला इन्होंने? बहुत तगड़ा आर्ग्यूमेंट बताया कि हमारा जो फ्यूचर है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। The future will be dependent on ethno-nationhood. हम एक एथनिसिटी के होंगे, हमारी मेजोरिटी होगी, वही मेजोरिटी इस देश को रूल करेगी। माइनॉरिटीज को एक्सक्लूड कर दो, माइनॉरिटीज हमें नहीं चाहिए, जो भी यूनिवर्सल विचारधारा है उसको निकाल दो, ये जितने भी डिफरेंस है उसको डिस्ट्रक्ट कर दो और यूनिफॉर्मिटी के मुताबिक चलो, ठीक है। That is what the civilizational ideas are portrayed today. In Germany, France, Sweden, such kind of ideas are going on, ठीक है। इंडिया में इस तरीके के आइडियाज नहीं है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके के विचारों को आगे नहीं बढ़ाता है। ये सनो ऑथर बोलता है इंडिया, द इंडियन इको ऑफ ऑल दिस इज सेल्फ एविडेंट, ठीक है, इन द स्पिरिट ऑफ आइडियाज एंड एटीट्यूड्स दैट चैलेंज existing constitutional schemes of a liberal democracy with a primacy of individual rights. So देखा जाए इंडिया एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी को चैलेंज करता है, ठीक है। इंडिया इस विचार को इको करता है, इको करना मतलब सपोर्ट करना, ठीक है। सो इंडिया ऐसे विचारों को सपोर्ट करता है, बट मिस्टर पुतिन हिमसेल्फ may be merely instrumentalist in his quoting of such writer and his use of their ideas to pursue his goal of making Russian an autonomous center of world development. तो रशिया को एक बड़ा वर्ल्ड डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर बनाने की कोशिश है पुतिन की, अपने एक से जो क्या बोलते हैं प्राइड को वापस लाने की बात है, अपने एक सेल्फ एस्टीम को वापस लाने की बात है, पूरे वर्ल्ड में रशियन ग्रेटनेस दिखना चाहिए, ये पुतिन साहब लाने की कोशिश कर रहा है। बट he's just mere instrumental in quoting such kind of writers, so he's not possibly following in a full-fledged way about these ideas. Still, his speeches have referred to Eurasian and other concepts and justify a rendering of Russian history vis-a-vis Ukraine that goes beyond mere facts. ठीक है, तो वो कोट करते हैं कि हमारी हिस्ट्री रशिया की है, यूक्रेन भी रशिया का ही पार्ट है, तो यूक्रेन एक तरीके से रशियन है, ठीक है, अलग नहीं है, हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। हिज एम्बिशंस मे बिकम और मे कम अनस्टक, वो शायद अचीव ना हो बिकॉज ऑफ ओवररीच, उनका ओवररीच हो गया ना कि रशिया बोलता है कि यूक्रेन उसका है, ठीक है, यूक्रेन रशिया का है, वो ओवररीच हो गया। बट मैकिंडर वर्ल्ड व्यू and the larger ideological challenge remain and geopolitical viewpoint, इसको देखना बहुत जरूरी है।
ठीक है। सो दोस्तों क्या आर्ग्यूमेंट का फ्लो था? आर्ग्यूमेंट का फ्लो था कि यूक्रेन के कंफ्लिक्ट को, ठीक है, यूक्रेन कंफ्लिक्ट हैज टू बी व्यूड फ्रॉम यू कैन से 3 पॉइंट ऑफ व्यू। यस और नो? व्हिच आर द 3 पॉइंट ऑफ व्यू? The first point of view is Mr. Putin is not a sensible leader. Is not a sensible leader. Okay? He is not listening to what Ukrainians are saying. ठीक है? He is not doing that. That's number one. Number two, that's very important point which is coming from geopolitical, you can say, viewpoint. ठीक है, if you see the Ukrainian conflict from the context of geopolitical viewpoint, what you get is, number one, you can say there is a theory which says land power versus sea power. Okay, sea power is in the hand of USA and land power is in the hand of East Europe. जिसके पास ईस्ट यूरोप का पूरा कंट्रोल होगा वो पूरा इन चीजों को कंट्रोल करेगा। दैट्स अ जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट। ठीक है, हाउएवर रशिया इस चीज को मानता है और चाहता है कि एक बफर जोन होना चाहिए। ठीक है, बफर जोन होना चाहिए। ठीक है, एंड द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड सिविलाइजेशनल आइडियाज। ठीक है, ओके, व्हाट इज द सिविलाइजेशनल आइडियाज? लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, that is called egalitarian, ओके, और रूल ऑफ लॉ। ठीक है, उसके मुताबिक चलेंगे या हम कम्युनिटेरियन चलेंगे। दैट मीन्स आर वी गोइंग टू वर्क ऑन, यू कैन से, ethno nationalism? So they say ethno nationalism is expanding. Okay, in France, in Germany, in Sweden, possibly India is also supporting in that way. ठीक है, so Ukrainian conflict has to be viewed from this 3 angle. ठीक है, और फिर उस नजरिए से उन्होंने बोला that Putin is not doing right thing. ठीक है, one is insensible leader, second, ठीक है, he is trying to protect this land power, whatever is the solution which is going to come to Ukraine, ठीक है, it will act as a buffer. but क्या जो सी पावर वाले लोग हैं इस बात को मानेंगे या रशिया को यू कैन से कॉर्नर करेंगे? ये एक बड़ा यू कैन से सवाल पैदा होगा। और सिविलाइजेशन आइडिया के मुताबिक आजकल ये विचारधारा चल रही है और ये वाली विचार सही तरीके से नहीं चल रही है। यस और नो? ठीक है, दिस इज व्हाट द आइडिया है। सो देयरफॉर पुतिन इज बेसिकली बीइंग क्वेश्चन। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। ठीक है दोस्तों, लिस्ट डाउन ऑल द टफ वर्ड्स। So if you see the questions to be raised, है ना, जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अच्छे से आंसर दीजिए। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी अ 2-way कम्युनिकेशन, इट शुड नॉट बिकम मोनोलॉग। दिस इज लेक्चर, ओके, दिस इज अ प्रॉपर स्टडी पार्ट। ओके, दिस इज नॉट अ रैंडम कि भाई सुन लिया, है ना, यूट्यूब पे आए थे, कोई मूवी देख रहे थे सलमान खान की, वैसा नहीं है। यस नो? कौन देखता सलमान खान की मूवी? पता नहीं, बट एनीवे, व्हाट इज द थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय हाल्फोर्ड मैकिंडर? ठीक है, प्लीज टेल मी व्हाट इज द थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय हिम। Does India follow the ideologies of Germany, France? If yes, in what manner we are same to them? If no, then what is the difference in our ideology and their ideology? And what are the ideological challenges Mr. Putin faces today? ठीक है, questions are very challenging. If you have understood this, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, I am sure you will be in a position to manage this. ठीक है, आपको ये आंसर देने में मजा आएगा। Okay, great दोस्तों, thank you very much for watching this. Don't miss out to like our channel. ठीक है, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू लार्ज नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स, टू वेराइटीज ऑफ द टेलीग्राम चैनल, सो दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन गेन द राइट नॉलेज, राइट अप्रोच, ठीक है, अबाउट हाउ टू रीड इट। दोस्तों, जब मैं पढ़ता हूं तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पे ऑथर कैसे अपने व्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। यस और नो? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ग्रेट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।